Okay, guys, welcome back to IT Point. And see here today we will start our next session about kinematics, especially the discussions of the questions. Yes, audible and visible. Okay, Ishka, I'll show you everybody. Okay, so see here, guys, in this class, what I'm planning. देखो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमें सॉल्व करने थे बट फॉर दैट हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट थी we required chain rule for differentiation. So in this class, first what I will do, I will start with chain rule for differentiation. Clear, guys? So let's see the questions also. Kinematics, for example, we have a particular question in sheet number 2. Yes, in which we are facing a little bit problems, like question number 06. Clear, guys? Okay. So I hope everybody is there. Why only we have 36 users? What is going on? Where are the remaining students? आई होप भार्गव इज देयर ओके हाँ ठीक है भार्गव दिख रहा है मुझे इसका स्ट्रेस ओके 37 नेटफ्लिक्स यस उत्कर्ष यार लोग मतलब ठीक है बीच में 2 मिनट का गैप होता है उसको भी टैग हो जाते हैं सारे के सारे ओके राइट गाइस so because I can see only 36 users are there so it will be a little bit tough अब अगर मैंने चेन रूल बता दिया तो बाकी लोग की तो इसमें हवा निकल जाएगी ओके ओके भार्गव यू ओके ठीक है राइट 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 या फिर क्या करें Okay, see again, let's do one thing. Until and unless बाकी सारे स्टूडेंट भी वापस आ जाते हैं, till then let's do the derivation for equations of motion. Clear, guys? Okay. आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे, but before that, let's take a little bit theoretical portion. Clear? First उससे शुरू करते हैं, and once it is over, then we'll talk about chain rule for differentiation. Clear, guys? Yes, we have a little bit line problem. Line की थोड़ी सी problem है यहाँ पे, but I hope board is visible. I hope board is visible. ओके ठीक है चलो तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं लेट्स सी सबसे पहले राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ओके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड अब देखो इसका मतलब क्या हुआ आई होप इट्स विजिबल कॉर्नर्स आर विजिबल ओके गाइस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ओके सी हियर देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ okay we already know like what is the first equation of motion what is first yes room like chocolate room okay ठीक है what is first equation of motion first equation of motion is v equals to u plus at clear guys okay तो ये इक्वेशन पर्टिकुलर आपकी आती कहां से है we will see the okay dark chocolate okay ठीक है I hope you guys like dark chocolate right क्योंकि मैं तो चॉकलेट वगैरह खाता नहीं okay that's good ठीक है okay people are feeling hungry right यार सुबह सुबह खाने पीने की बातें मत किया करो एक तो वैसे ही हैं सारे ओके ठीक है चलिए okay see here guys we are talking about first equation of motion and what is first equation of motion v equals to u plus at all of us know कि ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है बट इन टुडेस क्लास व्हाट वी विल सी द डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर गाइस देखो कैसे डिराइव करते हैं जस्ट लुक एट द बोर्ड यहाँ पे ध्यान दो सपोज करो वी हैव अ पर्टिकुलर पर्सन आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन एंड सपोज इट स्टार्ट्स इट्स मोशन हैविंग इनिशियल यस मिस्टर ए राइट तो बच्चा देखो हो गया रहा है मिस्टर ए भाई साहब जो है ये अपना मोशन शुरू कर रहे हैं and the initial velocity of Mr. A is given as u. Clear? U initial velocity है. Let us assume acceleration is a, and in some time t, Mr. A covers a distance x. Means Mr. A जो अपने A position से शुरू करते हैं और B position तक पहुंच जाते हैं. Clear? See here guys, we have already done this section. What we are doing? Mr. B will also come in relative motion. Okay, Utkarsh? अभी जब हम लोग relative motion बच्चों शुरू करेंगे, then Mr. B will also come. No problem. तो कहने का मतलब ये है मिस्टर ए ने मोशन शुरू किया having initial velocity u acceleration a and to reach from point A to point B the time taken by Mr. A is t seconds clear guys what we are looking at the derivation of equations of motion okay तो यहाँ पे देखो फर्स्ट मैं किस एक्सप्रेशन का यूज करूंगा a equals to dv by dt
Just look at this expression. A equals to dv by dt. Clear, guys? Okay. As you see, acceleration, relationship between acceleration and velocity as well as a equals to dv by dt. What we are supposed to find out? यार अपने को find out करना है velocity v की वैल्यू. Clear? तो अगर v की वैल्यू निकालनी है, देखो लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था, क्या बताया था, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बताया था लाइक दिस, फ्रॉम x to velocity to a. If we are moving in forward direction, then what we are supposed to do? In that case, we are supposed to do the differentiation. Here, guys. But suppose अगर तुम backward direction में जा रहे हो, if you are moving in backward direction, then what you are supposed to do? In that case, you are supposed to do the integration. Clear, guys? अब यहाँ पे देखो अपने को acceleration पता है, velocity निकालनी है. Then what we are supposed to do? We are supposed to do integration. What were the steps? मैंने ये कहा था dv को अलग कर लो, dt को अलग कर लो. Clear, guys? So in the same way, dv और dt को हम लोग अलग कर लेंगे. So see here, let's do the separation. I can write down dv equals to a times into dt. See. Now, once we have our relationship dv equals to a times into dt, what we will apply? We will apply limits. Clear, guys? Next, क्या बताया था मैंने? Yes. Okay, Srishti, we are just doing the derivation of first equation of motion. Clear? We are just doing the derivation of first equation of motion. Okay. Yes, I can see. Okay, okay. So see here, सबसे पहले velocity की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे velocity की कौन सी लिमिट आएगी? Initial. Clear है? यहाँ पे velocity की कौन सी लिमिट जाएगी? Final limit. Here time की कौन सी वैल्यू आएगी? Initial, and here time की वैल्यू आएगी final. So initial velocity is u, final velocity is v, initial time is 0, final time is t. Clear, guys? So if we see integration of dv equals to a times dv. अब यहाँ पे देखा, here we have initial velocity u, final velocity v, initial time 0, final time. Now, if you can remember, what was the different integration of dx? The integration of dx was equals to x. In the same way, integration of dv. dv का बच्चों integration क्या होगा? dv का integration होगा v. Clear? So dv का integration हो गया v. Immediately, let me know if you have any doubt in integration. Although I am repeating everything again and again, but still, if any student finds any complexity, just immediately let me know. Okay, number of students are good right now. I can see 51 users are there. Okay, that's good. तो यहाँ पे देखो dt को जब इंटीग्रेट करोगे, it will be t. Limit will be from 0 to t. Clear, guys? तो अब यहाँ पे देखो इस v को v से हम रिप्लेस कर देंगे, it will be v. Then this will be replaced by u having a negative sign, that is minus u, and what is it? A is here. अब यहाँ पे a देख लो. पहले इस t को इस t से रिप्लेस करेंगे, it will be t. Then this t will be replaced by 0. So from here, v minus u comes out to be 80. On our first equation of motion has been derived, that is v equals to u plus a. Clear, guys? Just copy up to here. We have derived our first equation of motion, that is v equals to u plus a. Clear, guys? Just copy this. Done. Very good, very good. What about rest of the students? Just let me know so that we can move forward. Just a minute, sir. Okay. Very good, Rituraj, Urjita. Okay, good. Yes, Shivani, take your time, no problem. Just take your time and let me know when you guys are done. Okay, okay, Bhargav, that's good, that's good. Okay, Bhargav means what is clear? I think board is clear or equation is clear. I'm getting a little bit confused. Okay, guys, both. Okay, that's good, that's good. Equation also. Okay, Dishka, completed. That's right. Okay, guys, so it's final call. Is there anyone who still has any doubt? Just let me know. Because I'm going to rub the first equation of motion and we are going to do the second equation of motion. Okay, both of them are clear. Very good. Right. So, completed. Anisha has also completed it. So, let's move to the second equation of motion. Okay, guys, see. Write down next heading in your copy. Second equation of motion. Okay. Initial values will remain same. Okay. See here, guys. What is second equation of motion?
Second equation of motion is all. The equation was x equals to ut plus half at square. Okay, Bhargav done, Sindri done, very good. Okay guys, see here, what is second equation of motion? X equals to ut plus half at square. Clear? तो उसका अपने को डेरिवेशन करना है. अब चलो यहाँ पे ध्यान से देखो. उसके लिए the relationship which I will use, that will be equals to v equals to dx by dt. Okay. Now see here guys, once again same funda, velocity equals to dx by dt. What we are supposed to find out? Suppose velocity is given and displacement is supposed to be calculated. So v पता है और x निकालना है, means once again what we have to do? We have to do integration. Clear guys? So let's do the integration. Yes. Okay, Aman, just look at the board, see here what is going on. Because only 15 or 16 users were there. क्योंकि बाकी के सारे Netflix देखने चले गए थे, ठीक है? तो हम लोग ने क्या कर रहे हैं यहाँ पे? We are deriving the equations of them. So that कि if you join the classes at late, तो उसमें भी आपका कुछ miss ना हो. Clear Aman? We have already derived first equation of motion. Now we are talking about second equation of motion. Okay. यार सही में एकदम चॉकलेट वाला रूम बन के आ रहा है. Okay, Aman, I hope you are clear right now. By the way, Aman, where were you? Okay, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं. Second equation of motion मैंने क्या कहा? Okay, let me see the chat box also. Sir, change the heading from first equation to second equation. Okay, ठीक है, कोई बात नहीं यार, एक काम करते हैं, इसको second equation of motion कर लेते हैं. Instead of first equation of motion, we will write second equation of motion. Okay, so what was the expression v equals to dx by dt? Or I can write down dx equals to v times dt. As I told you, we had to do the separation of x as well as t. तो हमने क्या किया? x को भी सेपरेट कर लिया बच्चों और t को भी सेपरेट कर लिया. Clear? Okay. चलो, Urjita, I think right now it's okay. Second equation of motion clear? Okay. तो यहाँ पे देखो, taking the with okay, Aman, project with for college. यार कॉलेज का प्रोजेक्ट, कॉलेज तो बंद पड़े हैं. Okay, Aman beta, which project you are talking about? Because all the colleges are closed. Okay, चलो कोई बात नहीं. Talking, okay, ठीक है, talking कोई बात नहीं. So see here, we have an expression of dx equals to v into dt. But we already know that dx. What is the value of v? V is equals to u plus at multiplied by t. Here, okay. Further, we can write down dx equals to u into dt plus a into t dt. Just see here, simple integration. ये सारे rules मैं तो बता चुका हूँ. So from here, see dx equals to u into dt plus a times t into dt. Now see here, guys. वाली चीज देखो u. Just tell me whether u is a constant or variable. Okay, but RT point का okay, I don't have any idea about it. Okay, just leave it. Just tell me whether u is a constant or variable. Sir, constant. Okay, very good, Srishti. Pooja, yes, Pooja. Okay, I can see the response. Ishika is telling me it's a constant. Okay, guys. Ishwari is also telling me it's a constant. Very good. Okay, see here. Rituraj is also telling me a constant. Okay, guys, as I told you in physics class, everybody is supposed to provide me the answers. Clear? Always try to develop a particular habit of answering the questions. That is important. Question का answer करना बहुत ही important है. हमेशा ध्यान रखना. Okay, guys. So see here. Okay, so I guess everybody is clear with this. हमेशा ध्यान रखना. During the motion, anything can happen. Clear, guys? During the motion, due to acceleration, velocity can increase as well as it can decrease. But the initial velocity always remains constant. Always remember this fact. Initial velocity will always remain constant. तो अगर अपने पास कोई constant है, तो constant को हम क्या करते हैं? We take the constant outside of the integration. So see here, what is this? I will apply limits like this. Here, guys. Okay. And what is the initial displacement? We will consider 0. Final displacement is x.
What about time? Initial time is 0, final time is t. What about time? Initial time is 0 and final time is t. So if you integrate dx, what is the value? The value comes out to be x. Limit will be from 0 to x. Okay. If you integrate dt, what is the integration of dt? Integration of dt is t. Limits will be from 0 to t. Plus a. A is also constant. Remember that. जो भी acceleration है वो throughout the motion constant है. That's why we have taken acceleration a outside of the constant. And what is the integration of t? That will be equals to t square divided by 2. And what will be the limits? The limits will be from 0 to t. Just substitute the limits. पहले क्या करेंगे? इस x को x से replace करेंगे, so it is x. X को 0 से replace करेंगे, then it is 0 equals to u times t को t से replace करेंगे, it will be t. Then we will replace t with this 0, so t minus 0 plus a by 2. इस t को t से replace करेंगे, this is t square. Then t को 0 से replace करेंगे, so it will be 0 square. So the expression which we have x equals to this will be ut plus half at square, and this is our second equation of motion. Just copy up here, guys. Everybody, देख लो तुम लोग की second equation of motion का derivation हमने कर लिया है. Look at the board and let me know if anyone has any problem. Let's just look at the expression y a by 2. Okay, Urjita, see है. देखो ये जो t है, t का इंटीग्रेशन क्या होगा? t square divided by 2. Here, the formula which we have t to the power n into dt. This comes out to be t to the power n plus 1 whole divided by n plus 1. Clear? Okay. Okay, Urjita, I think it's clear to you. Okay, that's good. Okay, everybody just copy this as expression. We have calculated first equation of as well as second equation of motion. Done, sir. Okay, done. Very good, very good. Yes, immediately let me know when you guys are done. So without wasting time, we can proceed to new things. Completed. Okay, Sir. done. Okay, okay, very good, very good. It's done. Project yes, everybody. Harshal, but I'm not able to know that in which question, which equation should be used. Okay, Harshal, just for a second. जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बेटा तुमको क्लियर हो जाएगा. ओके हर्षल? Once you start solving the numericals, then you will have the idea like in which case, which equation you are supposed to use. Harshal, did you miss any class? Harshal, hello. Harshal, बेटा अगर इक्वेशन का आइडिया नहीं लग रहा है तो just no. Okay, attended all the classes. Okay, then don't. When we solve the questions, na, then you will realize like which case, which equation we are supposed to use. चलो भाई, अब तो डेरिवेशन हो गया. अब आज के क्लास के मेन टॉपिक पे आते हैं. दैट वाज चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन. एज आई टोल्ड यू गाइस, ये जो रूल होता है, इस रूल के ऊपर जेई ने कई बार उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं. जस्ट लाइक नंबर 5 और 6 जिसके बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे हम उसी की बात करने वाले हैं. ओके, व्हिच सेक्शन विल यू वांट टू गेट रिपीटेड? चेन रूल. ओके, नो प्रॉब्लम. सी यार मुकुल, अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है. अभी हम राइट नाउ वी आर गोइंग टू डू चेन रूल व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास. ओके, ये बोर्ड साफ कर रहा है, गंदा कर रहा है. ओके, चलो कोई बात नहीं यार, चला लेंगे काम, कोई दिक्कत नहीं है. Okay, so see here guys, right, what about derivation of third? Yes, sure, that's a good question. See here guys, third equation not an independent equation. हमेशा ध्यान रखना. Like we have first two equations. देखो, first equation क्या है? V equals to U plus AT. What is second equation? X equals to UD plus half AT square. Okay. What is third equation? V square equals to U square plus 2A. Okay. So see here. फर्स्ट इक्वेशन, ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी v इक्वल्स टू u प्लस 80 और ये जो सेकंड इक्वेशन है x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर,
These two equations are independent equations. Independent क्यों कहते हैं हम इनको? क्योंकि इनका इंडिविजुअल डेरिवेशन होता है. जो थर्ड इक्वेशन है ये इंडिपेंडेंट नहीं है. अगर तुम फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करोगे, which equation we are talking about? First equation as well as second equation. So if you combine first one and second one with the third one. अब कंबाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? t को एलिमिनेट करना पड़ेगा. एक काम करना, फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू कैलकुलेट करना और सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देना. You will see that you will have third equation of motion. Clear guys? Okay, what we are supposed to do by combining first equation of motion as second equation of motion, we will get the third equation of motion. Clear guys? I hope this is okay to everyone. Okay, Aryan, that is your home assignment. Just try to solve it. Clear guys? So take it as your home assignment. मैंने क्या कहा? फर्स्ट इक्वेशन में t है, सेकंड इक्वेशन में t है. फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में t को हटा दो, then you will get the third equation of motion. Okay guys, take it as your home assignment because in this class we are not supposed to do the derivation of equations of motion. Basically जिसके ऊपर हमें focus करना था that was chain rule for differentiation because we wanted to solve some questions which already appeared into JEE. Okay, तो चलो पहले उसको कर लेते हैं. अगर इसके proof में कोई problem आती है then that we will see in the next class. Okay guys? Okay. Chalo, that's good. That's good. Okay, guys. So right now, next heading, chain rule for differentiation. Next section, which we will see, that would be chain rule for differentiation. Okay, just look at it. Okay, अब इसको ध्यान से देखना यार, ये उतना इजी नहीं है. Because I told you कि जेई में जो क्वेश्चन आया था वो उसी के ऊपर बेस्ड था. And so many times आपका फिजिक्स में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां पे चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन यूज ना हो. Try to understand that. See it. बहुत ही सिंपल सा रूल है, यहाँ पे ध्यान देना. Suppose if you have an expression like this, d by dt of t to the power n. What is its differentiation? बताओ सभी लोग फटाफट. d by dt of t to the power n. What is its differentiation? So t to the power n plus 1 upon n plus 1. No, I'm talking about differentiation. Aryan. Yes, Shivani. n t n plus 1 n minus 1. Sorry. Yes, Shivani, that's right. N into t to the power n minus 1. Okay, so no, it's not n t to the power n minus 2. It's not n t to the power n. Yes, so it's n t to the power n minus 1. Clear guys? So हमेशा यार ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज मत होना. Where differentiation में क्या होता है? n t to the power n minus 1. Integration में क्या होता है? t to the power n plus 1 divided by n plus 1. So don't get confused. Clear? Okay. So see here, d by dt of t to the power n, this comes out to be n t to the power n minus 1. Nothing new. All of us know this particular result. Clear? But d by dt of t to the power n, हम सबको पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? n t to the power n minus 1. Clear guys? Okay. Mushfiq, are you trying to say something? No, Okay, sir. no. Okay, Some that's network problem. That's okay. So, but see here, suppose if you have a different type of expression like d by dt of x to the power n. In this case, see here, what is the difference? दोनों में difference समझना. पहले एक चीज देखो. Here we have t और यहाँ पे भी t है. तो यहाँ पे जो t है और यहाँ पे भी t है, तो जैसे तुम differentiation करते हो, वैसे ही differentiation करना है, उसमें कोई change नहीं होंगे. और in other words, what I am trying to say, इस केस में chain rule की requirement नहीं है. क्यों requirement नहीं है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे भी t है और यहाँ पे भी t है. Clear? But if you see the second expression, क्या यहाँ पे आपको difference दिखाई दे रहा है? What is the difference in second case? Denominator and numerator are different. Numerators and denominators are different. Very good. Guys, as you can see, यहाँ पे x है और यहाँ पे t है. Clear? So here is x and here is t. तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, t and x has different values. Yes, Aryan, absolutely right. t and x they have different value. तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो उस केस में हमें अप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल. Clear guys? Okay.
और चेन रूल तुम लोग को डिटेल में पढ़ना है व्हेन यू विल स्टडी कैलकुलस इन योर 12th स्टैंडर्ड। वहां पे टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन, देयर यू विल स्टडी एवरीथिंग इन डिटेल। यस, differentiation of x with respect to t, yes that's a proper language Suresh, that's right, okay very good। तो यहां पे बच्चों क्या होगा, d by dt of x to the power n, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x है यहाँ पे t है, क्लियर, और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। सो व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, फर्स्ट जैसे तुम एज यूजुअल जैसे डिफरेंशिएशन करते हो, इन द सेम वे वी आर सपोज्ड टू डू द डिफरेंशिएशन इन द यूजुअल, क्लियर। तो यहाँ पे देखो d by dt of x to the power n, its formula will be nx to the power n minus, clear। फॉर एग्जांपल यहाँ पे t और n का किया था, it was nt to the power n minus 1, it does d by dt of x to the power n, it comes out to be nx to the power n minus 1 multiplied by, अब यहाँ पे देखो डिफरेंस आएगा, इसमें dx by dt से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। Here guys, how do you remember this d by dt of x to the power n, हमने क्या देखा, here is x, here is t, so that's why what we are supposed to apply, we are supposed to apply chain। अब चेन रूल में अपने को क्या करना है, पहले तो सिंपली इसको एज इट इज लिखना है nx to the power n minus 1, बट एंड में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, dx by dt, क्लियर। जस्ट कॉपी दिस रूल, वेरी गुड वेरी गुड, nx to the power n minus 1 multiplied by dx by dt, copy up to it guys। Okay, done. Very good. Now let's come back to our problem. If this rule is clear to everyone, just look at the board and let me know when you guys are done. Because we have to apply this rule in such type of questions. Okay, very good. Sir, please repeat. I got disconnected. Okay, okay, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, see here, 60 see here, d by dt of t to the power n, ये कोई नई चीज नहीं है, we already know this, t to the power n that comes out to t to the power n minus 1, but suppose करो if you are doing the differentiation with respect to t, d by dt of x to the power n, मतलब यहाँ पे t वेरिएबल है और यहाँ पे वेरिएबल तुम्हारा x है, तो in that case what we are supposed to do, जनरल वे में ही हम करेंगे डिफरेंशिएशन एंड वी विल राइट आउट nx to the power n minus 1 multiplied by, यहाँ पे एक नया टर्म तुम्हारा ऐड हो जाएगा, that is dx by dt। Okay Bhargav, yes that's a good question, why, to answer this why you have to move into 12th standard and there your mathematics sir will tell you what, okay। तो बस एक साल और वेट कर लो, ज्यादा दूर नहीं है, just wait for 1 year। Bhargav, are you asking about the proof? Sir, Yes. sir, I think so. It is because that we need to differentiate it function also. In first part, if we differentiate t only, then it comes 1. Okay, see here basically what happens na, Amal, I think Amal ने पूछा था, yes RN, that is the best rule, जो होता है वो होता है, right? क्योंकि हम लोग उसकी डिटेल में नहीं जा सकते, we can't move into the proof of everything, clear? देखो ये जो x है ये भी तुम्हारा t का फंक्शन है, अब ये x क्या हो सकता है, this x can be trigonometric function like sin x cos x tan x, this x can be algebraic function like x cube plus x square plus x plus 10, clear। so ये x कुछ भी हो सकता है, clear guys, x is a function, लेकिन मैं उतनी डिटेल में नहीं जाता क्योंकि मैं जितनी डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा तुम लोग उतने ही कंफ्यूज होते जाओगे, क्लियर। Yes, sir. Sir, तो yes sir, I am not saying that. I am saying that if in for upper part also, if we differentiate like what we did in second dx by dt, if upper part also we did dt by dt, it comes 1. I am saying okay, that. that is the part, yes yes absolutely right, absolutely right, absolutely right, no problem at all। ओके हर्षल, सी यार अगर 12th में आपको फिर ओके आपने मैथ ड्रॉप कर दिया है, हर्षल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडब्ल्यूटी। हाँ तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार। देखो अगर तुम्हें प्रूफ जानना है तो मैथ्स वाले स्टूडेंट अगर प्रूफ की बात करते हैं देन इट्स ओके, इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मी यू हैव हार्डली लाइक 45 क्वेश्चंस आर देयर, आपको तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने हैं, तो तुम्हें तो प्रूफ के बारे में परेशानी नहीं होना चाहिए। फॉर एंडोवेट स्टूडेंट्स प्रूफ डजंट मैटर बेटा, ठीक है,
उन्हें फटाफट बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. क्लियर? Okay, Anisha is also preparing for NEET. Okay, see all the NEET students don't bother about the derivations. Clear guys? Derivations से तुम्हें कोई मतलब नहीं है. You are just supposed to solve the question. That's all. Okay, ठीक है. That's good. Rituraj is also preparing for NEET. Okay, but physics is common. देखो, तुम maths की preparation करो या NEET की preparation करो, physics तो common ही है ना. अब जिनको derivation देखा है, वो 12th में जाकर के डेरिवेशन देख लेंगे. फॉर एग्जांपल 12th मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स. क्लियर? और अगर आप नीट के हैं तो आपको डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपको. हर्षल सी यार, फिजिक्स इज इजियर इन नीट एग्जाम. लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है क्वेश्चंस का, बट प्रॉब्लम होती है कि यू गाइस डोंट हैव दैट मच टाइम. देखो, जेई का जो स्टूडेंट है, क्लियर, उसके पास टाइम ज्यादा रहता है क्योंकि उसके क्वेश्चन थोड़े से कट हैं. नीट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास टाइम ज्यादा नहीं रहता. दे आर सपोज टू सॉल्व एवरीथिंग इन विद इन अ मिनट. ओके, ठीक है. सो वी आर सीइंग हु बिलोंग्स टू जेई एंड हु बिलोंग्स टू नीट. ओके गाइस, ठीक है. दैट्स योर नीलाक्षा. जेई, पूजा इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, सिद्धि इज टेकिंग जनरल. ओके ओके. एनडीए इज आल्सो ओके. एनडीए में भी आता है क्वेश्चन. एनडीए में सेम क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा और लो आ जाता है और इंग्लिश के जनरेशन आ जाते हैं फिजिक्स के, एज वेल एज जो तुम्हारा थोड़ी सी इंग्लिश आ जाती है. दैट्स ऑल. ओके, सी एंड ऑल फॉर ऑल दीज एग्जाम्स सिलेबस इज कॉमन. वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई और नीट और एनडीए, किसी भी XYZ एग्जाम की तैयारी करो तो बच्चों सिलेबस सबके लिए कॉमन है. क्लियर? ओके ओके, नो एट ऑल. चलो ठीक है. अब देखो यहाँ पे ओके ओके, अब वी हैव सीन लाइक आर यू प्रिपेयरिंग फॉर. चलो बच्चों अब एक काम करते हैं, बोर्ड के ऊपर फोकस करते हैं, बिकॉज वी आर सपोज टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. और उस क्वेश्चन को तुमने लोगों ने सॉल्व कर लिया तो उसके बेसिस पे हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. See here, the question is like this. Okay, everybody just look at the board and focus. The question is like this. The relation between time and distance is given as t equals to alpha x square plus beta x, where alpha and beta are constants. Then the value of retardation. Okay, we are supposed to calculate the value of the retardation. Okay, see here guys. What is given? Just look at the board. Okay. The relation between time and distance is t equals to, see here, t equals to alpha x square plus beta times. This is the relationship between time and distance is given as t equals to alpha x square plus beta times x, where alpha and beta are constant. The value of retardation. See here, okay, Utka, sheet number 2, question number 06. We are talking about sheet number 2, question 06. Okay, see here, everybody. Sheet number 2, question number 06. Let's try to solve this question. Okay, guys. तो यार यहाँ पे देखो, अगर what we are supposed to find out, we are supposed to find out acceleration. Clear, guys? Okay. तो पहली चीज देखो, अगर acceleration अपने को निकालना है, what is the formula for acceleration? Acceleration is equals to dv by dt. Clear, guys? Okay. Acceleration is equals to dv by dt. Means if you want to find out acceleration, first we have to find out the value of velocity. Clear? If you want to find out the value of acceleration, first we are supposed to find out the value of velocity. तो velocity कैसे निकालेंगे? Velocity के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है v equals to dx by dt. Okay. अब इस एक्सप्रेशन को देखो, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ. Alpha times x square plus beta times x minus t equals to 0. Okay. Now इस क्वेश्चन में अब हम लोग क्या करेंगे? देखो, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस होते थे वो बहुत इजी होते थे. लाइक इस तरीके का एक्सप्रेशन होता था, x equals to t2. अब अगर अपने को वेलोसिटी निकालनी है, इट्स वेरी सिंपल. इन दिस केस v equals to dx by dt. क्या बन जाएगा ये? 3t square. दिस इज आवर आंसर. बट इस एक्सप्रेशन में एंड इन दिस एक्सप्रेशन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि आपको हमें दिया जाता था x इक्वल्स टू समथिंग, लेकिन यहाँ पे x इक्वल्स टू समथिंग नहीं दिया गया है. क्लियर गाइस? यहाँ पे x में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है. क्लियर? सो दैट्स व्हाई व्हाट वी विल डू, सी हियर,
कैसे इसको approach करेंगे, see how to approach this question. What I am going to solve this question is पूरी question को मैं t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा. क्यों मैं रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं? जनरल आइडिया इस तरीके से ले सकते हैं कि x इक्वेशन में प्रेजेंट है. If I differentiate it with respect to t, तो मुझे क्या मिल जाएगी? I will get velocity. Okay, you are trying to say something. Okay, just let me know. Okay, up to here. Are you trying to say something? Why is it breaking? Okay, what about rest of the students? Is it clear? Okay, clear. Okay, I'll do No, one sir, it thing is on the breaking. page. Okay, It's right now it's clear or not? Okay, guys. Everybody. Okay, right now it's okay or not? Yes, sir, it's okay now. Okay, right, okay. I hope I'm audible to everyone. Sir, again it Okay, is it's breaking. okay. Again, it's breaking. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's do one thing. एक काम करते हैं. Again, it's breaking. So, what is the problem? I don't know. So, after can you please just a minute, Aryan. Question number 5 of DPP 2. Okay, Aryan, we have already done question number 5. Again, okay, it's breaking sometimes. Okay, so let's do one thing. Right now, guys, just let me know whether it's okay or not. Okay, no problem, Aryan. I will try to send you the solution. Okay, guys, right now it's clear or not? Just let me know. Guys, फिर मैं मोबाइल से लॉगिन करता हूँ. देख लो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बता दो, फिर मोबाइल से लॉगिन करके वायर से काम चला लेते हैं. So now It's clear, sir, now. Okay, now it's clear. Okay, guys. So see here, what is going on? We can manage. Okay, no problem at all. So main point क्या है? See here, guys, what is going on? Basically, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे x दिया गया है. तो if I differentiate this equation, x को जब मैं differentiate करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x को differentiate करने से अपने को मिलेगी बच्चों velocity. Okay, guys. So see here, इसको differentiate करते हैं. Remember, what about alpha and beta? Remember, alpha and beta are constant. So if I differentiate this expression, alpha times d by dt of x square plus beta times d by dt of x minus d by dt of t. Okay, and this will be equals to 0. भाई क्या किया मैंने? पूरी इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में हमने क्या कर लिया? डिफरेंशिएट कर लिया. क्लियर गया? अब यहाँ पे देखो क्या अप्लाई करेंगे. सी है, व्हाट इज गोइंग ऑन? यहाँ पे x है और यहाँ पे t है. कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा अपने को? ओके गाइस, जस्ट टेल मी. In first chain rule, sir. chain rule, very good. In first expression, if you can see, we have to apply chain rule. What about second expression? Yes, sir, chain rule. Obviously. Yes, sir, yeah. Okay. What about the third one? So it can be done by a normal differentiation. It's Yes. Yes, guys. Okay, okay. Absolutely right answer. See here. यहाँ पर बच्चों x है और यहाँ पे t है. So in that case, we have to apply chain rule. Here we have x, here we have t. So once again, we have to apply chain rule. But if you see here we have t and here is also t. तो यहाँ पे chain rule apply करने की requirement नहीं है. चलो भाई, क्या statement है chain rule का? Once again, let us see. d by dt of h to the power n. Answer is nx to the power n minus 1 multiplied by dx by dt. Here guys. So let's apply this rule. See here, alpha multiplied by x square. X square को differentiate करोगे, what will be your answer? 2x multiplied by what is the last term? dx by dt plus beta. What is this? dx by dt. Okay. Minus d by dt of t. t का differentiation कितना होगा? 1. This is equals to 0. First say up to here, if you have any problem. Now tell me, what is the value of dx by dt? Velocity. Clear guys? What is the value? Yes, of sir. Yes. Dx by dt. Yes, Chaitanya, you are absolutely Yes, sir. right. Dx by yes, I am.
Okay, Ayan, are you trying to say something? No, sir. Okay, that's good. तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या है बेसिकली जो dx by dt का टर्म है ये dx by dt टर्म तुम्हारा क्या बन जाएगा velocity. So what you can write down this will be twice alpha x multiplied by dx by dt. It comes out to be velocity plus beta times dx by dt. Once again it comes out to be velocity. Minus 1 equals to 0. And remember guys, if you want to find out the value of acceleration, what we are supposed to calculate? First we are supposed to calculate velocity. And once we have velocity, then we will do it. Then we can find out the value of acceleration. Here, from this expression, I can take common velocity and this will be twice alpha x plus beta minus 1 equals to 0. So from here, see, we are able to find out the value of velocity, and this is equals to twice alpha x plus. Here, okay, just look at the board. We have already calculated the value of velocity, but this is not the answer. What we are supposed to find out? We were supposed to find out the value of acceleration. Okay, Mukul, see, in which case you have problem in first column or second column? Mukul, beta, I am talking to you. In which case you have problem? First column or second column? Yes, Darshan, you can see the recorded lectures, just talk to Milind sir. If you have any problem, like you guys have made a particular or regarding time or anything, just talk to Milind sir. Dx by dt, no, Bhargav, d by dt is not equals to 1. Who told you? D by dt of t, d by dt of t, this comes out to be 1. Okay, Bhargav, just let me know. Let me clear it up. Yes, Mukul. So please repeat after that one. Alpha x square plus beta x minus t is equals to 0. Okay, okay. Okay, anyone else? Bhargav, just tell me whether your doubt is cleared or not. Okay, Siddhi, I hope you are okay. Okay, right. Mushfiq, yes. Okay, so see here, Mukul. Can you please repeat? I was disconnected. Okay, no problem at all. Guys, see here, we have a particular equation like alpha x square plus beta x minus t equals to 0. हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट वी नीड वेलोसिटी. क्लियर गाइस? अब वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? वेलोसिटी वाज इक्वल्स टू dx by dt. सो अगर हम x को डिफरेंशिएट करते हैं देन वी गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. क्लियर? यहां देखो ये अपना पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है. मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं. किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं? टाइम के रिस्पेक्ट में. सो सी हियर अल्फा कांस्टेंट है, बाहर कर लिया हमने d by dt of x square. बीटा कांस्टेंट है, we have taken it outside, d by dt of x, t d by dt of t. Here we have x and here is t. तो यहाँ पे अपने को क्या अप्लाई करना पड़ेगा? चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन. यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, वंस अगेन चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे t है और यहाँ पे भी t है, तो चेन रूल अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. What is chain rule? D by dt of x to the power n, it is equals to nx to the power n minus 1 multiplied by dx by dt. Apply करो, x square का क्या बना? 2x into dx by dt. Beta times d by dt. D by dt of t that comes out to be 1. Okay. Now see here. अब ये क्या बनेगा? dx by dt. इसकी वैल्यू क्या बन जाती है? This is equals to velocity. Beta times dx by dt. ये भी क्या बन गया तुम्हारा velocity. -1 equals to 0. या v को v हमने इधर लिया, ये कॉमन कर लिया equals to 0. So we have calculated the value of v that is equals to 1 by 2 alpha plus beta. Okay. See here, velocity की वैल्यू आ जाती है 1 by 2 alpha x plus beta. Okay, Mukul, I think right now it's clear to you. Yes, sir, it's clear now. Okay, that's good. But see here guys, we हमें क्या find out करना था? हमें find out करना था the value of acceleration. So what is the formula for acceleration? A equals to dv by dt. Just look at the. मतलब जो भी velocity की value आई है, उसे हमें क्या करना पड़ेगा? We have to do the differentiation. Yes, you are right, absolutely right. Whatever is the value of velocity, we have to do the differentiation once again. Okay. So यहाँ पे देखो what I am doing, I will write down a equals to d by dt and I will write 1 by
2 alpha x plus beta. Okay. So this is our expression d by dt of 1 by 2 alpha x plus beta. अब ये बताओ if I want to do the differentiation of this कौन सा रूल मुझे फॉलो करना चाहिए लाइक कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन डिवीजन रूल यस सिस्टर एब्सोल्युटली राइट ठीक है चलो The सही है division राइट rule. वेरी गुड अनिश राइट चैतन्य ओके सी हियर गाइस अगर इसको हमें डिफरेंशिएशन करना है देन वी हैव टू गो फॉर डिवीजन रूल आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर द डिवीजन रूल क्या रूल था अपना d by dx of a by b just let me write down that was equals to denominator into numerator differentiation minus numerator into denominator differentiation divided by denominator square this was our rule so what we have to apply the same rule over here okay so same rule apply करते हैं and let's see how to find out the answer okay guys see here यहाँ पे देखो d by dx of a by b remember we have to apply yes Ishwari you are right remember we have to apply division rule अब देखो यहाँ पे क्या हो गया अगर मैं a by b से इसको कंपेयर करूं तो what is the value of a is equals to 1 and what is the value of b is equals to 2 alpha x plus beta b is equals to 2 alpha x plus beta here guys चलो भाई अब इस फॉर्मूला वैल्यू रखते हैं फर्स्ट में कुछ नहीं कर रहा बस मैं वैल्यू अप्लाई कर रहा हूं क्लियर what is this b into dA by dx what is the value of b that is equals to 2 alpha x plus beta multiplied by d by what was this dv by dt d by dt न्यूमरेटर में क्या है देखो a की जगह पे तुम्हारा क्या है 1 so I will substitute the 1 minus numerator into denominator differentiation that is 2 alpha x plus beta whole divided by denominator square that is 1 by 2 alpha x plus beta whole square. Just look at this particular expression and if you have any doubt just let me know. Okay guys. See here up to here. Chalo. I hope up to here everything is clear. Okay. Remember we are very close to the answer. Okay, it's clear to everybody. Okay, anyone has any question in this section? यहाँ तक हम कैसे आए? Remember guys, ये tough question है, ये JEE का easy question नहीं है. As you can see, we are taking a lot of time to solve this question. Yes, sister, you were trying to say something. No, sir, no doubt. I was saying. Okay, okay, that's good. तो यहाँ पर देखो further क्या होगा? We will write down twice alpha x plus beta. What is the differentiation of 1? That comes out to be 0. Minus, now see here what is going on. 2 alpha is a constant, we'll take it outside और x अगर तुम्हारा आ गया then multiplied by dx by dt clear guys अच्छा एक बात बताओ बीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा everybody Sir, 0. सब sister constant है 0. 0 होगा yes sure okay all of you are right because beta is the constant so if we do the differentiation its answer will be 0 whole divided by see here 2 alpha x plus beta whole square. Further as you can see this answer comes out to be I can write it down like this minus 2 alpha dx by dt I can write down b multiplied by 1 by 2 alpha x plus beta whole square. See here guys. What I have written 2 alpha तो as it is लिख दिया dx by dt को मैंने b लिख दिया multiplied by 1 by 2 alpha x plus beta whole square. Here guys. So see here further I can write it down अब यहाँ पे देखो 1 by 2 alpha x plus beta 1 by 2 alpha x plus beta ये किसकी वैल्यू थी ये थी शायद वेलोसिटी की वैल्यू ओके just see your notes velocity was equals to 1 by 2 alpha x plus beta this was velocity was equals to 1 by 2 alpha x plus beta guys clear ठीक है तो this whole square ये whole square का मतलब क्या हो गया this will be equals to minus 2 alpha b multiplied by b square and your final answer is minus twice alpha into here guys just now we have solved a particular question और हमेशा ध्यान रखना ये क्वेश्चन तुम्हारा जेईई मेंस में भी आया था और साथ ही साथ एनडब्ल्यूटी में भी आया था okay guys just look at the answer and let me know still if you have any doubt
Just look at the answers and let me know if you have any doubt. No, sir. No, sir, it's Okay, clear. that's good. That's good. Because see here, in first class जब तुम लोगों ने पूछा था कि सर ये particular question solve करना है, what I told you guys कि इस question को solve करने से पहले we have to do a little bit preparation. And now आप इस particular stage पे हैं कि अब right now you can solve any question. Clear guys? Non-uniform acceleration के ऊपर base किसी भी question को right now you guys can solve it. Yes, Srishti. Sir, have you got the answer keys of the DPP? Oh, I forgot. I forgot actually. I चलो ठीक है asked मैं him, sir, but I didn't got it. Okay, okay. I will talk to Milind sir personally. Okay. I will make it sure कि आज ही आपको answer keys मिल जाए. Okay, guys. I Okay, will sir. talk to Milind Excuse sir me, and sir. try to. Yes. Sir, please explain last third step. Okay. Last third. Okay. यहाँ पे देखो ये simple है. ये जो 1 by something का square है अनीशा. तो what I have done 1 by something square को मैंने थोड़ा separate लिखा है. Still it is the same thing. Okay. एंड हमें पता है कि वेलोसिटी वाज इक्वल्स टू 1 by 2 अल्फा x प्लस बीटा. तो अगर 1 by 2 अल्फा अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो 1 by 2 अल्फा x प्लस बीटा होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू v स्क्वायर. v स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय v कम्स आउट टू बी v क्यूब. सर यस. It's clear, sir. ये ऑप्शन ही नहीं है. ऑप्शन में नहीं है बेटा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. But let's see, Anisha. Shivani, it's not present in the option. Are you sure? सर Oh, Yes, okay, okay. See, actually, options are wrong. The value of retardation. If you see the language देखें, Anisha, just look at the language. Retardation. Clear? Retardation का मतलब मैंने last class में क्या बताया था? Negative acceleration. And see here, we are having a negative sign. Clear? तो राइट ऑप्शन Yes, आपका sir. कौन सा हो जाएगा? ए पार्ट. दैट विल बी, देखो उन्होंने गलत लिखा है एक्चुअली. या ए पार्ट में है 2ab क्यूब. एक्चुअली इट्स नॉट a, it's 2 alpha. Instead of alpha they have written a. Okay Anisha, I hope it's clear. Yes, sir, it's clear. Okay, सर okay. तो अगर So रिटार्डेशन रहेगी तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा ना. obviously right, minus sign should be there, but see here, I think who asked this? Shivani. यस सर. ओके शिवानी बेटा देखो बेसिक चीज क्या है, माइनस साइन वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए. लेकिन सपोज करो एग्जाम रूम में हो, क्लियर, एंड यू हैव 4 ऑप्शंस ए बी सी एंड डी और माइनस साइन वहां पे नहीं प्रेजेंट है, देन इन दैट केस व्हाट वी आर सपोज टू डू. फिर एग्जाम हॉल में तो हम सीबीएसई के ऊपर केस नहीं कर सकते ना. लाइक वी कैन नॉट फाइल अ पर्टिकुलर केस ऑन जेई कि भाई यहाँ पे माइनस साइन मिसिंग है. तो इन दैट केस व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी हैव टू गो फॉर मोस्ट appropriate answer. Clear? ओके सर. हाँ. तो in that case आपका आंसर क्या होना चाहिए? A part. But Shivani, if you ask me whether A part is right or wrong, so it's not 100% accurate. Actually में वहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए था, A की जगह अल्फा प्रिंट होना चाहिए था. Clear? ओके सर. Okay, but it's a typing mistake, that's all. Okay, sister, see here the remaining questions. Let's mark few questions today. हाँ ठीक है, आज इसको सॉल्व करना तुम फिर से. इनिशियल वेलोसिटी कब ऑकर होगी? t equals to 0 पे. सिस्टी क्वेश्चन नंबर 15. I am providing you a particular hint. Just try to solve this. I am sure you will be able to solve this. देखो डिफरेंशिएट y क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. तो जस्ट लाइक dx, जैसे dx by dt तुम लोग करते हो, in the same way you will do dy by dt. That's all. x की जगह उन्होंने y लिखा है और इनिशियल वेलोसिटी मींस t की वैल्यू तुम 0 कर देना, एक्सेलरेशन निकालना, उसमें t की वैल्यू 0 कर देना. You will see, you will be very easily you can find out the answer. Okay, sir. Okay guys, so let's mark few questions. चलो पहले कुछ questions mark कर लेते हैं जो हम solve कर सकते हैं. Sheet number 2 में question number 2, sheet number 2, question number 2 and 3, and then question number 11. Don't bother like if we have already done this, no problem at all. Then question number 19, question number 20 and 22. Question number 19, 20 and 22.
Yes, in next class we'll do the DPPs of kinematics also. Actually, we are doing the DPPs of kinematics. Sir, ओके हर्षल सी है, अगर आपको एससी वर्मा की थ्योरी अच्छी लगती है तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आप भी पढ़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि एससीवी में जो थ्योरेटिकल पोर्शन दिया गया है उससे 1000 टाइम्स ज्यादा डिटेल में आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. सो इफ यू लाइक 100% यू कैन रीड द थ्योरी ऑफ एससी वर्मा. वैसे मैं बच्चों देखो एक ही बात कहूंगा, न्यूमेरिकल तुम किसी भी XYZ बुक से सॉल्व करो, थ्योरी का जो पोर्शन है वो तुम्हें केवल क्लास को अगर फॉलो करोगे तो दैट विल बी बेटर. ओके, सी हियर द क्वेश्चंस व्हिच आई मार्क. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17, देन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 भी मार्क कर लो, 2, 3, 4, 5, 6. All these questions are okay. Please mark questions from DPT. Okay, sheet number 3 mark करो तुम लोग. Try to solve them. आज हम केवल वही क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर बेस्ड है guys. Remember, question number 1 and then question number 11, question number 1, 11, 12 and 13 and 14 and 17. Okay, guys, this is more than sufficient. Okay, Nilaksha, I'm doing prediction of number 3. Sheet number Hello, 3, sir. question number 1. Okay, just mark the questions first. Question number 11, question number 12, question number 13, and question number 14. Yeah, sure. Harshal, just talk to Milind sir, okay? He will provide you the link for recording. Okay, guys, so I hope that was all from today's class. Just try to solve all the questions. DPPs में जितने हमने मार्क किया उनको सॉल्व करके आना. देखो सॉल्व होते हैं नहीं होते हैं इट डजंट मैटर, लेकिन एटलीस्ट उनको अटेम्प्ट करके आना, सो दैट जब नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो तुम्हें समझ में आए. ओके Sir, thank you. Yes, Nikita, there is some change in syllabus also, but because see here there is अभी एक और बैच का टाइम हो रहा है, तो we'll do the discussion regarding syllabus change. Okay, next class we'll do the discussion. Okay, guys.